Hello everyone and a very good evening to all of you. बढ़िया संडे इवनिंग का माहौल है. I hope most of you have had your dinner. No conceptual challenges about food being a botheration and all of that. और वो सारे बेसिक्स के आगे बढ़ते हुए, what is the topic of our discussion in this lovely evening? We are going to have a very quick discussion on the concept of nuisance, right, which is quite a popular concept of tort law. Basically, if there is any loud music or foul smell or इस टाइप की कोई चीज किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ कोई अगर अनरीजनेबल इंटरफियरेंस हो रहा है, right, that is when we apply the concept of nuisance, and one of the parties is filing a case and can seek some compensation as far as any kind of damage or any kind of disturbance is concerned. Right now, before we move to our specific discussion on the concept of nuisance, my name is Debajyoti Das. As most of you know, I'm an alumni of Hidayatullah National Law University, and I've also secured an All India rank 20 in the NLS Bangalore entrance in 2006. I've also been a Microsoft Intellectual Property Research Scholar, and after graduation, I was also working with one of the topmost law firms in India called Amarchand Mangaldas, specializing primarily in their capital markets team. So that is securities and stock market related work. You guys can definitely join me on Telegram, right? You can join me on Telegram. This is the link to the Telegram group. And of course, if any of you are taking the subscriptions, right, if any of you are taking up the subscriptions, please do remember to use my code, that is DEB10. If you have been having fun in my lectures, if you've been enjoying my lectures, right, the best way to drop a high five to me and show your appreciation is whenever you are taking any subscription, please do remember to use my code. Right, most of you are also aware of the various unique features. बहुत सारे unique features हैं Unacademy के Plus as well as special classes platform के लिए, right? Raising a hand, unlimited quizzes. Obviously, you can attend the lectures whether they are live or the recorded versions, and so on. Today evening. Okay, so this is already today evening. Sorry, आज सुबह तक तो ये कोड था, right? But अब तो ये खत्म हो चुका है. I'm just आज सुबह के बाद I forgot to remove it. So I hope a lot of you had fun with the mock. I don't know if some of you gave it or not. Some of the important and very interesting batches that are coming up for you. We do have on the 22nd of December, we're starting off with the Emerge batch, which is for CLAT 2022 aspirants. We do also have the Legal Fix batch, which is the freshers batch for CLAT 2023 aspirants. This is starting off one day before Christmas. क्या कहते हैं इसको? Christmas Eve, है ना? 24th December is Christmas Eve, right? कुछ ना कुछ इस टाइप का नॉलेज भी ऐड करना चाहिए. एंड 26th December को क्या कहते हैं? 26th December is usually referred to as Boxing Day. Huh? I don't know if some of you know about this, but yeah, that's 26th December. आफ्टर न्यू ईयर भी कुछ इंटरेस्टिंग बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों. द DU ड्रीम बैच, which is starting off on the 3rd of January 2022, and we have the Law and Order batch, which is a one-stop solution for CLAT 2024 CLAT के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5th January से, right, starting on the 5th of January, we do have this particular batch that is available to you. Various educator curated tests Tuesday, Thursday और Saturday को चल रहा है, और उसका एनालिसिस हम 6:30 PM पे भी करते हैं. एंड ऑफ कोर्स द लाइव क्विज फीचर इज वेल एंड एक्टिव for everyone who is looking to
host a few quiz questions as well as to participate in the educator curated quiz as well, right? Having said all of those things, कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम सब ने डिस्कस कर लिया है. अब आते हैं हमारे टॉट के टॉपिक पे, दैट इज the concept of nuisance, right? That's essentially what we're going to be looking at. Nuisance is broadly of two types, right? There are two types of nuisance. There is private nuisance and there is public nuisance, right? There is private nuisance and public nuisance, जिसमें ज़्यादा complicated नहीं है. Basically, if there is an unreasonable interference with private property, right? अगर private property के साथ interference है, then it is private nuisance, right? If the interference is with public property, then automatically it becomes an issue of public nuisance, right? कब special damage होता है, कब special damage नहीं होता है, there are various other factors that we will obviously keep on looking at. Right now, the main difference between, if we are trying to compare between trespass and nuisance, right? अगर हम trespass और nuisance को compare करें, the main difference is unreasonable interference versus any interference, right? अब ये क्या, दोनों में difference क्या हो रहा है? Unreasonable interference is basically the test that is required, right? This is basically the test that is required for nuisance. ये nuisance का test है. ये जो है any interference, this is a test for trespass, right? Trespass to property, okay? Trespass to property. Obviously, trespass to person is your assault है, battery है, थोड़े और further complications and so on. So that kind of trespass, of course, is not something which is in relation to nuisance, right? उसमें property की बात ही नहीं हो रही. But nuisance और इसमें क्या difference है? Trespass में any interference, even if you have a barren piece of land, right? Even if somebody has simply a barren piece of land और कोई उस बंजर जमीन पे सिर्फ कदम भी रख दे, तो भी टेक्निकली वो ट्रेसपास के डेफिनेशन में आता है. बट नुइसेंस के लिए द इंटरफियरेंस हैज टू पास अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. एक डिग्री ऑफ इंटरफियरेंस होना बहुत जरूरी है. एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस, रैंडम काइंड ऑफ इंटरफियरेंस विल नॉट अमाउंट टू नुइसेंस. इट हैज टू बी अनरीजनेबल इंटरफियरेंस. अब अनरीजनेबल इंटरफियरेंस किस चीज के साथ होना चाहिए? Nuisance में physical interference is not a requirement. Okay? Physical interference हो ऐसा जरूरी नहीं है. There is no requirement of physical interference, right? As far as nuisance is concerned. Okay. Nuisance में क्या होना चाहिए? It has to be interference with the ordinary use and enjoyment. So physically interference जरूरी नहीं है. For example, if I have a neighbor, right? If I have a neighbor who is playing loud music in the middle of the night, it is not essential कि वो स्पीकर को भी ला के मेरे घर के अंदर रखे, राइट? ये जरूरी नहीं है. हाय सोहम, हेलो सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट. ट्यूशन से आने में लेट हो गया. अरे नो प्रॉब्लम सोहम, नो वरीज, नो वरीज. यू कम सो लेट from the tuition. What tuition is going on till like 9:30, 10, and that too like physical classes? इतनी सर्दियों में सोहम, that must be requiring quite a bit of commitment, yeah, to travel for tuitions in the middle of the night. But okay, good that you're back, especially if you're living in North India. There's so much such a sudden cold wave, I think, that has hit North India.
As in Delhi yesterday and day before yesterday, it was pretty cold, and today in Lucknow also it is quite spectacularly cold, huh? Yes, political science tuition are wonderful. Political science is a subject that I definitely enjoyed when I was in law school. Uh, so many interesting philosophers. I mean, I understand कि तुम्हारे स्कूल लेवल पे ऑफ कोर्स उतना उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं है पॉल साइंस में भी बाय एंड लार्ज it's more history than political science, but once you go to law school and you study about these philosophers, you will have a much better time with political science as well. Like John Locke and John Rawls, Leviathan and Thomas Hobbes. So many interesting political theorists, and the evolution of the law itself as a branch of political philosophy, um, from Plato and Aristotle and their concept of politia and all of those things. So कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा. आई नो सिलेबस अभी थोड़ा सा अलग है, तो अभी एग्ज़ाम के लिए ध्यान से पढ़ो तो ज़रूर ही, बट एन्जॉयमेंट पर्सनली आई थिंक एन्जॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है. Intellectual challenge थोड़ा ज़्यादा है when you actually reach law school. I live at Kolkata. Yeah, okay, that's fine. So then I'm sure the weather is comparatively much kinder than like Lucknow, Delhi and stuff, no? Khair, okay. Coming back, मैं वही बता रहा था कि for example, if your neighbor is playing loud music, right? तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल कि वो स्पीकर भी लाके आपके घर पे रख दे या घर के अंदर रख दे या बेडरूम के अंदर रख दे. None of that is essential. And therefore what I'm trying to point out is physical interference जो है वो जरूरी नहीं है. It is not essential that you need to have physical interference. But if your neighbor is playing loud music, you are anyway unable to sleep in the middle of the night. मान लो रात के 2 बजे आपका नेबर उसी में जो है लाउड म्यूजिक और ये सब कर रहा है. If it is already in the middle of the night, of course you are unable to sleep peacefully, and the right to sleep peacefully, correct, the right to sleep peacefully is of course a right which is part of your ordinary use and enjoyment of property, right? अब मैं अपने घर पे रात के 2 बजे कम से कम चैन से तो सो ही सकता हूँ, right? That has to be, right? That has to be a right, that has to be a freedom, which of course I also have, right? So should I be given that kind of freedom or not? Should that be treated as part of my ordinary use and enjoyment or not? Of course it is part of my ordinary use and enjoyment, and accordingly, right, accordingly is how we also determine कि हाँ इस टाइप का अगर interference हो रहा है, middle of the night की अगर बात हो रही है, then this will amount to nuisance as well. Right? Now there are of course some exceptions, right? There are of course some exceptions, like for example religious exceptions, right? कुछ religious exceptions भी हैं. Religious exception क्या है? Like for example, if today is Janmashtami, let's say, right? Or like in Christmas evening. अब Christmas evening में ही कुछ मामला अगर चल रहा है कि Christmas की शाम को कम से कम थोड़ा caroling होगा, थोड़ा ये होगा और इस टाइप का होगा, that kind of, right, that kind of interference, that kind of religious based celebration and this and that is something, right, that is of course something for which the law allows कि हाँ ठीक है, इतना थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उतना चलेगा, राइट? जन्माष्टमी की रात आप थोड़ा बहुत गाना बजाना और ये सब अगर हो रहा है, उस टाइप का इंटरफियरेंस भी चलेगा, राइट? किसी नेबर के यहाँ अगर जगराता और उस टाइप का कुछ कर रहे हैं, ये कुछ है वो कुछ है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशल ओकेजन. बट दिस डज नॉट मीन लाइक एवरी मॉर्निंग. This does not mean that you can do it every morning at 5.
कि एवरी मॉर्निंग नेबर अगर स्पीकर पे कर रहा है 4 AM एटसेट्रा, यस, दैट इज नॉट अलाउड. ओके, दैट इज नॉट अलाउड. आपको जो भी भक्ति की भावना आ रही है दिल में, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो वो आप बिना स्पीकर के भी, बिना लाउड स्पीकर के भी डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट. लाउड म्यूजिक पोस्ट 10 PM अगेन इज नॉट परमिटेड, राइट. एनी टाइम आफ्टर 10 PM लाउड म्यूजिक इज अगेन नॉट परमिटेड. सो यूल सी कि मान लो कहीं किसी की शादी वादी भी हो रही है आजकल, आप देखते ही हैं, राइट. कहाँ पर प्रोहिबिशन है? दिस इज एट रेसिडेंशियल एरियाज, राइट. इन रेसिडेंशियल एरियाज इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. ओके, इन रेसिडेंशियल एरियाज. तो हर जगह प्रोहिबिटेड नहीं है, बट रेसिडेंशियल एरियाज में तो प्रोहिबिटेड है. तो इसीलिए शादी बारात वगैरह भी आजकल आप देखते ही होंगे कि वो थोड़ा सा शहर के बाहर, थोड़ा सा शहर के बाहर फार्म हाउस या लॉन और ये सब जो होता है, मोस्टली रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है रेसिडेंशियल एरियाज में? स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट. कि रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारे प्रोहिबिशंस है, एंड वी डोंट वांट दोज काइंड ऑफ prohibitions and those kind of restrictions. We want to have a peaceful marriage, play a little music, have a little dance, और कम से कम इतना सारा problems हमें ना होता रहे, right? Sir, the houses that are located near clubs suffer from noises and almost regularly. Is this falls under exception? No. So if it is, so you have to understand there are certain places Soham which are notified as residential, right? तो अगर रेसिडेंशियल एरिया में वो क्लब है तो क्लब को वो रेस्ट्रिक्शन क्लब को फेस करना पड़ेगा, राइट. आप डेफिनेटली पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं एंड सो ऑन. नाउ ऑफ कोर्स इफ योर हाउस इज इन अ नॉन रेसिडेंशियल एरिया, इन अ मोर कमर्शियल एरिया एंड सो ऑन, then the problem, or rather the suffering is, or the burden is more on the house कि चलो वो तो कमर्शियल एरिया ही था तो कमर्शियल एक्टिविटी तो वो करेगा ही, राइट. तो उसी हिसाब से वी हैव टू अल्टीमेटली सी what was the location and therefore what are the rules applicable for that particular location, that locality. like अगर हॉस्पिटल है आसपास, राइट, तो वो उस रेंज में किसी की सर्जरी चल रही है, कुछ चल रहा है, आप उसी में गाना बजाना प्रायोरिटी नहीं हो सकता, राइट. it has to be it has to be taken into account that near a hospital this kind of problems etc should not exist, right. so एरिया क्या था? वही अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर वही होगा कि एरिया क्या था, राइट. पब्लिक न्यूसेंस में ऑफ कोर्स स्पेशल डैमेज दिखाना पड़ता है, राइट. डीजे नाइट न्यू ईयर इज एन एक्सेप्शन. हाँ, दैट इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पे तो चलो 12 बजे तक वो सरकारी परमिशन भी देती है ना. आप कहीं भी पता करेंगे तो 31 दिसंबर को वैसे भी किसी बार में भी वगैरह वगैरह हर जगह लाउड म्यूजिक के लिए अलग से परमिशन होता ही है कि 12 क्या 12:15 12:30 तक, ऐसे ही थोड़ी कि डॉट 12 बजा उसी में डीजे ऑफ, राइट. सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दें कम से कम. सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम, बट अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे. वो अनरीजनेबल नहीं है ना. इफ इट इज हैपनिंग ओनली वन डे, ओनली 31 दिसंबर को अगर हम देख रहे हैं, सिर्फ एक न्यू ईयर वाले दिन कोई थोड़ा गाना बजाना कर लिया तो आपको अनरीजनेबल नहीं है ना वो. दैट डज नॉट क्वालिफाई एज अनरीजनेबल, एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई वुड ऑल्सो लुक एट इट. एंड एनीवे लाइक आई सेड, गवर्नमेंट भी अपना स्पेशल परमिशन वगैरह 2 AM तक चलता है. आई थिंक परमिशन 2 AM तक यूजुअली नहीं होता है, राइट. नो आई नो कि कई जगह चलता है, नहीं चलता है. देखो, चलाने की बात ऐसी है कि हेलमेट के बिना लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, राइट. marijuana is prohibited but that is being sold, right? Now just because illegal things happen does not make it legal, right. just because things that are not permitted are happening doesn't mean that we will assume कि वो परमिशन ही था. वो परमिशन नहीं था, चलो अब पुलिस आई, रोकी नहीं रोकी. अब पुलिस वालों का भी तो नया साल था ही, वो भी थोड़ा घर वालों से बात कर रहे थे, so it's more of a practical challenge than anything else कि चलो ठीक है न्यू ईयर इवनिंग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत नाचना गाना बजाना चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, राइट. ओके, special damage requirement here. The idea is that
you must have suffered a damage that is different from the common damage that everybody has suffered. Okay, जो सबने भी कुछ ना कुछ डैमेज तो सफर किया ही है. लेट्स से अगर किसी रोड को डैमेज हो गया है, राइट, डैमेज टू रोड लीडिंग टू एयरपोर्ट. ओके, अब एयरपोर्ट को एक ही रोड जा रही थी, उसी रोड को किसी ने डैमेज कर दिया है वगैरह वगैरह. अब जिसने डैमेज किया है, यू वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. इफ यू वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, you will have to show you have suffered some special damage which is different from the damage that others have suffered. So for example, if the road is damaged, everybody has suffered a common damage, minimum एक common damage है जो सबने suffer किया है कि मैं भी गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ उस रोड पे, आप भी गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, सबका एक common type का restriction तो हो ही गया. But if I am a person who actually had a flight to catch, और मेरा उस रोड का जो डैमेज आपने किया था उसकी वजह से मेरा फ्लाइट ही छूट गया है, then I have suffered a kind of damage which is a little different, which is a little unique compared to the common damage, right? सबको एक कुछ तो common damage हुआ है कि कोई भी उस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन मेरा अलग से फ्लाइट भी छूट गया है, राइट? तो मेरा अलग से अगर फ्लाइट छूट गया है, that means that I have suffered a special damage which is different from the common damage that everybody has suffered. अब अगर मैं ये special damage नहीं बता पाऊंगा, if I am unable to show that there is a special damage that I have suffered, then I actually cannot claim compensation. Please be very clear. तो फिर मुझे कोई compensation नहीं मिलेगा as far as public nuisance is concerned. But if I am able to show special damage, public nuisance के लिए भी मुझे compensation मिल सकता है. See, private nuisance के लिए special damage is not a requirement. Because anyway it is not a common damage. There is no question of common damage. Interference is itself with your private property. तो आप ही के प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस हुआ है तो ऑब्वियसली आप ही को डैमेज हुआ होगा. सो देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन. बट व्हेन इट कम्स टू अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस वेयर द इंटरफेरेंस इज विथ पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट, in that situation you will have to show a special damage which is different from the others, right? Means in common damage the wrongdoer is paying for. हाँ, because वो causing damage to public property के लिए वो अलग से उसके against criminal case और ये सब कुछ होगा ही, right? So he or she, whatever, that person will anyway have to undergo the general procedure that the government is going to prosecute. But if you want to file, especially like you want to seek compensation from that person, प्रॉपर्टी आपका है भी नहीं ना, प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो सरकार को जो करना है वो करेगी. पर आप कह रहे हैं सरकार तो जो करेगी, मुझे अलग से पैसे चाहिए, राइट? आई वॉन्ट टू फाइल ए सेपरेट केस, आई वॉन्ट टू सीक स्पेशल कॉम्पेंसेशन. तो देन यू नीड टू ऑल्सो शो कि भाई जनता से छोड़ के मुझे कुछ अलग थोड़ा स्पेशल डैमेज, स्पेशल प्रॉब्लम भी हुआ है. एंड इफ यू आर एबल टू शो इट, of course you will get compensation. आपको compensation देने के बाद भी वो फिर से जेल जाएगा, क्योंकि सरकार causing damage to public property के लिए criminal case जो करना है वो तो सरकार करेगी ना. So that's why public nuisance requires a certain special damage, right? Okay guys, that's it for today. We will of course continue with our discussion on tort law. I think what are we meeting with day after tomorrow? Okay, nothing scheduled from tomorrow onwards, but I'll schedule some more tort classes from Monday. तो कल ही है, चलो परसों से कुछ नहीं तो, और कल हमारा प्लस का क्लास फिनिक्स वाले बैच में तो एनीवे मुलाकात होगी, है ना सोहम?
Do remember to use my code, guys. Dave10, just to do a quick repetition. And do remember to subscribe and hit the bell icon so that you are definitely not missing out on any kind of information. So when we start IPC very very soon, I think एक बार मैं schedule देख के tomorrow evening when we meet for the plus session, just एक बार मुझे याद दिला देना. IPC तो शुरू करेंगे. I think अभी पहले बस torts कर रहे हैं, but around January 10-15 तक शुरू हो जाना चाहिए भारत का पीनल कोड का डिस्कशन उस टाइम पे, राइट? ओके, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, सी यू गाइस सून, बाय बाय.